Good morning everyone. How are you all? So students, today we are going to start with the lecture number 2 of the same chapter, chapter number 19. And this is the it's English grammar from your book Perseverance grammar book, and it's of second class. We will be doing lecture number 2 of the same chapter, chapter number 19, and its composition, basically picture composition. So let us start. In the previous lecture I taught you about the exercise number 1 and 2. We did exercise number 1 and 2, and now we are going to do exercise number 3 and 4. We will be doing exercise number 3 and 4. Exercise number 3, it is given on page number 83 in your book, and exercise number 4, it is given on page number 84 in your book. Fine. So let's move forward. And the topics which we are going to cover in this lecture, first is I'm going to give you the explanation of exercise number 3 and exercise number 4 of chapter number 19. Then we will be discussing the review test 3. It is given on page number 72 in your grammar book only. Review test 3. Then I gave you an assignment in the previous lecture. Today we are going to discuss the solution of that particular assignment, and that assignment was based on chapter number 15, 16 and 17 of grammar. Fine. So, and I'm going to give you the next assignment, and which is that assignment is based on chapter number 19, composition. Okay, so let's begin now. Let's start. This is the exercise number 3. Look at the picture and answer the question. One has been done for you. You have to, this is basically the picture composition. इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको पिक्चर देखनी होती है और जो पूछा है आपसे वो आपको बताना होता है. अगर क्वेश्चंस पूछे हैं उस पिक्चर से रिलेटेड तो आपको उनके आंसर्स बताने हैं. अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो आपको फिलअप्स फिल करने हैं. अगर आपको लाइंस लिखने के लिए बोली है पिक्चर के बारे में तो आपको लाइंस लिखनी है पिक्चर के बारे में. ठीक है, दैट इज ऑल पिक्चर कॉम्पोजिशन. Fine. First question is, what is there in front of sofa? There is a television in front of sofa. You can look in this picture. It will help you to answer. Next question is, where is the woman sitting? कहाँ बैठी है वो? The woman is sitting on the sofa, or sofa is also known as couch. C-O-U-C-H. You can say couch or you can say sofa. What is the woman doing? वो क्या कर रही है? The woman is watching the television. The woman is watching the television. Next is, who are sitting near the woman? Woman के साथ कौन कौन बैठे हैं? The children are sitting near the woman. Fine. Next question is, where are the children sitting? बच्चे कहाँ पे बैठे हैं? The children are sitting in front of the television. In front of the television. What are they doing? Children, बच्चे क्या कर रहे हैं? The children are watching television. They are watching television. How many people are there in the picture? इस पूरी complete picture में कितने लोग हैं? There are 3 people in this picture. There are 3 people in this picture. I hope you will be able to do. So there are the answers. See, these are the answers which will help you to complete the exercise number 3. Now let's move on to the next exercise, which is given on page number 84. It's very easy. See, you all make tea at home. Sorry, not you. Your elder ones, they make tea at home. चाय बनाते हैं घर पे. अब आपको भी यहाँ पे चाय बनानी है. And it's very interesting. आपको पिक्चर देखनी है और पहले आप क्या करो, एक इसको एक्टिविटी की फॉर्म में करते हैं. हम अपनी मम्मा के पास जाओ और उनसे पूछ के आओ कि चाय कैसे बनती है. फिर वो वाले स्टेप्स आपको यहाँ पे देखने हैं. नाउ लुक एट द पिक्चर, राइट हाउ अमीना इज प्रिपेयरिंग द टी. वो चाय कैसे बना रही है. यू मे यूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. जो वर्ड्स दिए हुए हैं आपको नीचे यहाँ बॉक्स में, आप ये भी यूज कर सकते हो. ओके, फर्स्ट इज ऑन, बॉइल्स, टी, मिल्क. 1 or 2, pour means डालना, to pour the tea into the cup. Boiling, teaspoons is into water pan. Now let us start. First of all, let us read with blanks.
Amina dash making dash in the kitchen. She pours dash in a pan. She puts the pan dash the stove. Stove क्या होता है? गैस स्टोव होता है ना, गैस. The water is in the pan dash. She puts 2 dash of the tea and dash teaspoons of sugar into the dash. When the tea starts dash, she adds some dash. Finally, she dash the tea dash a cup. Now let us start. It's very interesting. First, Amina dash making dash in the kitchen. Amina क्या कर रही है kitchen में? Amina is singular. Amina is making क्या बना रही है? Tea. Amina is making tea in the kitchen. She pours. Pours means डालती है. वो क्या डालती है? पहले जब हम चाय बनाते हैं तो क्या डालते हैं? She pours water in the pan. पैन में पानी डालती है. She puts the pan dash the stove. Stove के कहाँ पे रखेगी वो पैन को? On the stove. The water in the pan dash. Water जो पैन के अंदर है वो क्या हो रहा है? Boil. It boils. She puts dash of tea. क्या डालेगी? टी के, चाय के चम्मच, teaspoons. And dash teaspoons of sugar. और teaspoons sugar, चीनी के कितने चम्मच डालेगी? It is your wish. If you are writing 1, then it will be teaspoon. It is written teaspoons plural, then it will be 2 teaspoons of sugar into the dash. किसके अंदर डालेगी? It will be in the pan. Next is when the tea starts, क्या हो जाएगी? जब सब कुछ डाल दिया हमने, चाय उबलनी शुरू हो जाएगी. When the tea starts boiling, she adds some dash. तो क्या डाल रही है उसके बाद वो? She adds some, let us see in the picture. When the tea starts boiling, she adds some milk. दूध डालती है उसमें. She adds some milk. Finally, she pours the tea. Pour means डालना. किसमें? Into a cup. Into a cup. Finally, she pour a tea into a cup. So this is all about exercise number 3 and exercise number 4, and these are the answers now. These are the answers. Let us read it. Amina is making tea in the kitchen. She pours water in a pan. She puts the pan on the stove. The water in the pan boils. She puts 2 teaspoons of tea and 2 teaspoons of sugar into the pan. When the tea starts boiling, she adds some milk. Finally, she pours the tea into a cup. This is all about exercise number 4. Now, next we are going to discuss this revision test 3, and we will be discussing just page number 72, and page number 73 I am going to give you that page in the homework. Page number 74 you will be doing over here, and page number 72 I am going to discuss in this lecture, and page number 73 will be your homework. So let's start. Fill in the blanks with the correct words from the bracket. There are the words given over here. You have to think. जब भी slowly होता है, जब भी पीछे ly आता है तो से, धीरे से, slow धीरे, ठीक है. डिफरेंस समझो. ब्राइट होता है चमकना, ब्राइटली चमक मीन्स चमकते हुए. पोलाइट प्यार, पोलाइट मीन्स प्यार, पोलाइटली प्यार से. फाइन. नाउ द टॉर्टॉइज वॉज मूविंग डैश. कैसे चल रहा होगा? धीरे से चल रहा होगा, है ना. द टॉर्टॉइज वॉज मूविंग स्लोली. नेक्स्ट इज द सन वॉज शाइनिंग ब्राइट और ब्राइटली, ब्राइटली तेजी से चमक रहा था. ही आस्क्ड अ क्वेश्चन पोलाइटली, प्यार से पूछा उसने क्वेश्चन. दीज आर ऑल एडवर्ब्स. ये क्या है? एडवर्ब्स. When the word end with ly, these are adverb. The river ran dash under the bridge. The river ran smooth under the bridge. My mother was singing dash for us. My mother was singing soft. My mother was singing softly for us. तेज थोड़ी ना गाना गाएंगी, बहुत प्यार से ही गाएंगी. परी drank the milk hurriedly या हरी? हर्डली, जल्दी से.
परी ड्रैंक द मिल्क हरिडली, तेजी से, जल्दी से पी लिया. फाइन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट इज join each pair of sentences with the help of conjunctions given in the bracket. आप सबने conjunctions पढ़ी हैं. You all have read about conjunctions. Conjunctions are the joining words which join two sentences to make a one sentence, or phrases or clauses. We have done three conjunctions, not kinds. We have done 3 conjunction. First is and, जब एक सेंटेंस पॉजिटिव होता है, अनदर नेगेटिव होता है, और वी ऐड समथिंग इन सम अनदर थिंग. जब हम किसी चीज में कुछ और ऐड कर रहे होते हैं तो हम कंजंक्शन एंड यूज करते हैं. और मीन्स या ये या वो, व्हेन यू हैव वन ऑल्टरनेटिव. बट जब हम कंट्रास्ट शो कर रहे हैं आपस में, व्हेन वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव. फर्स्ट इज यू मस्ट स्टडी हार्ड, you will fail. There is a conjunction given over here in the bracket. You have to join it by using this conjunction. So the answer will be you must study hard or you will fail. या तो कठिन परिश्रम कर लो, हार्ड वर्क कर लो, नहीं तो फेल हो जाओगे. Choice is yours. Tina is shy, Tina is intelligent. अब दोनों में पॉजिटिविटी है. जब एक में शाइनेस को हम इंटेलिजेंट के साथ ऐड कर रहे हैं, टीना ही है ना. सो टीना इज शाई बट इंटेलिजेंट. तो आपस में शाइनेस और इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, उसका कंट्रास्ट है. टीना इज शाई बट इंटेलिजेंट. शर्मीली तो है वो, लेकिन फिर भी बुद्धिमान है. वुड यू लाइक टू ईट एप्पल, वुड यू प्रेफर बनानास? देयर इज अ ऑल्टरनेटिव, देयर इज अ चॉइस. वुड यू लाइक टू ईट एप्पल और बनानास? चॉइस इज योर्स. इमरान इज स्मार्ट, ही इज कॉन्फिडेंट. इमरान इज स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट. एप्पल आर स्वीट्स, एप्पल आर जूसी. बस दोनों है, जूसी और एप्पल स्वीट को हमें कंबाइन करना है. एप्पल आर स्वीट्स, एप्पल आर स्वीट एंड जूसी. माई फैमिली इज गोइंग ऑन अ वेकेशन, आई एम नॉट गोइंग विद देम. मेरी फैमिली तो, मेरा परिवार तो जा रहा है छुट्टियों पर, लेकिन मैं नहीं जा रहा उनके साथ. माई फैमिली इज गोइंग ऑन अ वेकेशन बट आई एम नॉट गोइंग विद देम. लेकिन मैं उनके साथ नहीं जा रहा. Understood these sentences? So you need to do it with a pencil and a beautiful handwriting. Keep this in your mind. Okay? So next part of this lecture is, this is the homework solution. I gave you the assignment which was based on preposition. Now we are going to discuss it. So first is, the cap seller was sleeping dash the tree. पेड़ के कहाँ बैठा सो रहा होगा? Under the tree. The cap is standing and the boy is standing dash the gate. गेट के कहाँ खड़ा होगा? गेट पे. जब पर्टिकुलर जगह पे खड़ा है तो क्या यूज करते हैं? at. The letter came dash Saturday. कोई भी डे होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो क्या यूज करते हैं? on. Fine. The school will reopen dash December. मैंने आपको बताया था, जब भी कोई मंथ होता है तो क्या यूज करते हैं? in. तो क्या आएगा यहाँ पे? in December. I distributed the chocolates among the children. दो के बीच में नहीं है, सबके बीच में है, तो क्या आएगा? among. They returned home at 8 o'clock. जब भी हम कोई टाइम की बात करते हैं तो वहाँ क्या आता है? at. जब भी कोई कंट्री की बात करते हैं तो in. I stayed in Japan. Boat is sailing below the bridge. ब्रिज ऊपर है और बोट नीचे है, उसके नीचे सेल कर रही है. Next is, this I gave you to match, है ना, with the correct position of the cat. Where is the cat? It is on. So on. Now it is under the table. Under. It is beside. Beside means by the side of. Beside. In front of. के सामने. दो के बीच में है between. अब उसके पीछे है behind. जब किसी के पीछे होती है तो क्या यूज करते हैं? behind. Next question which I gave you, to underline the conjunctions in the following sentences. Now these are the conjunctions over here. There were only 3 conjunctions which I taught you, and, or, but. So it's simple as that. You have to find and, or, but in these all sentences and underline. He will come today or next week. Or is the conjunction. I called him twice but he did not answer. But is the conjunction. She came home and switched on the television. And you have to be there on time or they won't let you in. तुम्हें वहाँ पे समय पर होना पड़ेगा, नहीं तो वो तुम्हें नहीं आने देंगे. Choice is yours. Or conjunction.
Finish your breakfast quickly or you will late for the school. Journey was late but we enjoyed it. He failed many times but never lost hope. So these are the conjunctions which I have underlined for you. The next question which I gave you was fill in the blanks by using the suitable interjections. आप सबने किया interjections. What are interjections? Interjection are the words which express our sudden feelings, है ना? So there are interjections given over here, and I told you that one interjection can be used more than one time. Ouch, जब अचानक से दर्द होता है, sudden pain. Hello when we greet someone. Wow when some surprise or some beautiful. Congratulations means बधाई हो. Hooray when someone is too happy. Alas when someone is sad. Hooray again when someone is very happy. So dash I lost my mobile yesterday. जब फोन गुम हो जाएगा तब हम sad होंगे. So we will say alas. And do not forget to put this exclamation sign. If you will not put, your marks will be deducted. The exams are over. जब हमारे exams खत्म हो जाते हैं हम बहुत खुश हो जाते हैं. Hooray. Dash you are looking great. Wow when we see something beautiful. Dash what are you doing there? Hey what are you doing there? Hooray we won the match. Dash you have come first in the class. जब कोई भी कक्षा में प्रथम स्थान पे आता है तो हम उसको विश करते हैं ना, बधाई हो, congratulations. Ouch, I hurt myself. Hello, how are you? Wow, you look beautiful in a red sari. Alas, he is dead. Now, what's your homework is? You have to complete exercise number 3 and 4 of chapter number 19. Which is given on page number 83 and 84. That is all about composition. And you have to do page number 73 of review test 3. Do it. It's all for your revision. इससे आपकी revision ही हो रही है और आपको topic और अच्छे से clear हो जाएंगे because there are less number of topic in term 3. That's all in this lecture. Thank you.